How's the Josh? How's the Josh? Very good, very good, very good. We are gathered here in Abu Dhabi today. I feel extremely excited, more than I have in many, many years, because we have the top 300 leaders from all over India gathered here today. I hope you enjoy the facilities, the hotel, the agenda, and the excursions that will come. Thank you, Sangeeta. Bas. Translation वाला? आप टॉप 300 लीडर्स को यहां देखकर मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूं और उम्मीद करता हूं आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. Very good. Give a warm hand for Jatin, excellent translator. All right, let's get started. I want to start today with giving you an update on the direct selling industry around the world. This has also been discussed with the Indian Direct Selling Association and the World Federation of Direct Selling Association. So these are some of the main challenges at the moment in the DS industry. मैं शुरू करना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अपडेट के साथ, जिसे शेयर किया गया है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी. सो ये कुछ चैलेंजेस जो अभी ये इंडस्ट्री फेस कर रही है. During the pandemic, something happened. Many things happened, but there was a major disruption in the way we used to purchase products. And that disruption came primarily from e-commerce and online. पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कुछ बदलाव, इनफैक्ट बहुत सारे बदलाव, और ये था किस तरीके से लोग परचेज कर रहे थे. Just to give you an example, the other Saturday, I was at home in Vasant Vihar, and at 11 p.m., I'm watching Netflix, and I feel all of a sudden a bit peckish. I feel cravings for popcorn. And I go to the kitchen, but I have no popcorn at home. So what do? I take my phone out, I open Blinkit, I order microwave popcorn to Vasant Vihar. 8 minutes later, it arrives to my home. और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि शनिवार के दिन मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था और तभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी और मैंने पॉपकॉर्न ऑर्डर किए. 8 मिनट के अंदर वो पॉपकॉर्न रात के 11 बजे मेरे घर पर डिलीवर हो गए. So things have changed. Many things have changed for the better. But things have changed. And all of us in this room, we have to also change. The only way to get on top of challenges is to change and work harder. चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी बदली हैं, और हम सब ने जो इस हॉल में मौजूद हैं इन बदलाव को एक्सपीरियंस किया है. We have also in the past 3 years seen increased competition, both on e-commerce, but also in the cosmetics segment. More and more players are coming to India. There are more and more local companies opening up shop with new, innovative products. और हमने देखा है इन पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो बढ़ रहा है, ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में बल्कि बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज में. In 2021, the first half of the year, we saw an enormous recruitment. Only in August to stop. And all of a sudden in August 2021, it became more difficult to prospect. It became more difficult to recruit. 2021 के पहले 6 महीनों में हमने देखा बहुत तेजी से रिक्रूटमेंट को होते हुए, और अगस्त के बाद हम देख रहे हैं एक चैलेंज रिक्रूटमेंट में. Not only in India, all over the world we saw the same phenomenon. और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी ही सिचुएशन है. We also saw in the direct selling industry that during the pandemic, people got used to being at home. People got used to having their private life intertwined with their professional life. And people started after a while to like it. Being at home, being with your family, and do some Zoom meeting or do some
Teams meeting or phone calls, etc. And we saw comfortability setting in. And we've seen all over the direct selling industry that some of you in here and many of your downlines found themselves feeling comfortable, feeling that, hey, I'm making enough money to go out and continue to build my business requires more efforts than it did before the pandemic. And therefore, I'm happy with what I have today. That's there. और हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान लोग घरों में थे और घरों से ही काम कर रहे थे और उसमें वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए. अब जो पहले का एफर्ट था एक इनकम को कमाने के लिए, ये वक्त उससे ज़्यादा एफर्ट डिमांड करता है. Right? So I start this business day today with this slide. Because I believe very much in calling a spade a spade. This is where we are right now. Now, for the rest of my presentation, I will take you through how do we get out of here? How do many of you in here make more money in the coming 12 months than you did before? That's at the end of the day, how you fulfill your dreams. So मैं आज का दिन मेरी इस स्लाइड के साथ शुरू करना चाहूँगा और बाकी का जो प्रेजेंटेशन है हम इस डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे निकलेंगे उस पर बेस होगा. We have seen e-commerce explode over the past years. And when we look at e-commerce or online shopping in general, Oriflame cannot compete on the size of line. Amazon have hundreds of thousands of different products, from refrigerator to car tire to jewelry to cosmetics and many in between. ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और अगर आप ऑरिफ्लेम की बात करें तो हम कॉम्पीट नहीं कर सकते ई-कॉमर्स से, क्योंकि यहाँ हज़ारों लाखों डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं ई-कॉमर्स पर. So we can't compete on the breadth of the portfolio. और जितने हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारा कोई कंपैरिजन और कंपटीशन नहीं है ई-कॉमर्स से. We cannot compete on the price of the products with e-commerce. Their only responsibility in the e-commerce platforms is to push the companies for lower prices. और हम प्राइस को भी कॉम्पीट नहीं कर सकते ई-कॉमर्स में, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ कंपनीज को पुश करना है कि वो कम से कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचें. And in Oriflame, we don't want to be the cheapest brand. Absolutely not. And we will never be the cheapest brand in India. और ऑरिफ्लेम में हम चीपेस्ट ब्रांड नहीं बन सकते और ना ही बनना चाहते हैं. So how do we compete? How do we compete? We compete on personal recommendations. That's where direct sales can compete. There are no recommendations personally on online or on e-commerce, but in direct sales we have personal recommendations where I share my experiences from the Oriflame products, from using the Oriflame products with my potential customers. Not only point to the catalog and say, discount, 30% off, you have to buy. That will not work in the future. Personal recommendations. तो हम compete कैसे करेंगे? हम compete करेंगे पर्सनल रिकमेंडेशन से, और पर्सनल रिकमेंडेशन ई-कॉमर्स पर अवेलेबल नहीं है. सिर्फ कैटलॉग में ये देखकर कि इस पर 30% का डिस्काउंट है, आप प्रोडक्ट ले लें, ये फ्यूचर में काम नहीं करेगा. सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रिकमेंडेशन आपको करनी है. Oriflame started its business 55 years ago in Sweden based on two principles. One, we want independent entrepreneurs to make a living from our earning opportunity. That's the number one. Number two, excellent cosmetics products. 55 years ago, that was the strategy. Today, that's the strategy. 5,000 years from today, it will continue to be the strategy. Oriflame need to have entrepreneurs who make money through our compensation plan. And we will continue to make sure that we have the strongest offering available in India. 55 साल पहले जब ऑरिफ्लेम की शुरुआत हुई थी तो दो ही प्रिंसिपल से हुई थी. ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हम क्रिएट कर सकें और बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको दे सकें आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए.
We have been in India soon 27 years. 27 years. We are now a young adult running a business in India. We know a lot of experiences over these years, and we are very clear on the strategy for the next 5 to 10 years. हमें भारत में 27 साल होने को हैं और हम बिल्कुल क्लियर हैं हमारी स्ट्रैटेजी पर. Right. So between the years of 2018, 2017, 2020, it was increasingly easy to prospect online, to get those prospects converted into recruits, and many of you in this room took full advantage of that ease. 2018 से 2021 की बात करें तो आसान था ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट करना, उन्हें रिक्रूट करना, कन्वर्ट करना, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका एडवांटेज लिया है. Now it's 2022 and the honeymoon is over. ये 2022 है और अब शायद उतना आसान नहीं होगा ऑनलाइन रिक्रूट करना. It is not that easy any longer. So what is required? तो अब किस चीज की जरूरत है जब चीजें आसान नहीं है तो? Hard work. And as individuals, you are all running your own businesses in Oriflame. I have been a businessman since I was 25. That's nearly 25 years ago I started. And I only know one thing. There will be challenges. Whether you like it or not, there will be challenges. इसका सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही सॉल्यूशन है, कड़ी मेहनत. मैंने भी 25 साल पहले अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बिजनेस में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत से आप उन्हें पार पा सकते हैं. So what do we do when challenges come our way? We have to adapt. We have to improvise and try new things. And we have to never give up. We have to overcome those challenges. Because the option or the alternative to not overcoming is to surrender. And for me, that's not an option. तो जब चैलेंजेस हैं तो क्या करना चाहिए? आपको अडेप्ट करना चाहिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, इम्प्रोवाइज करें, क्या बेहतर कर सकते हैं, एंड जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर आने की कोशिश करें. Many entrepreneurs, myself included, feel frustration when things don't go our way, right? We get surprised and we get frustrated and we don't know what to do. Frustration leads to demotivation. Demotivation leads to inaction. Inaction leads to anger and negativity. And you're in this negative wheel of emotions. जब चीजें मन मुताबिक नहीं होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है तो डीमोटिवेशन आता है, डीमोटिवेशन आता है तो जो एक्शन लेने चाहिए आप वो भी नहीं ले पाते और आप एंगर और नेगेटिविटी से भर जाते हैं. Do you know what I'm talking about? ठीक है. In my world, frustration should lead to the complete opposite. Inaction is the wrong antidote to frustration. What is the right antidote to frustration is more actions, more meetings, more positivity, more efforts. That's the only way to explode out of frustration. और अगर फ्रस्ट्रेशन है तो फ्रस्ट्रेशन में आप नेगेटिव होकर काम नहीं कर सकते हैं. फ्रस्ट्रेशन का इलाज है जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लें, बहुत सारे, कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकें, आप ज़्यादा पॉजिटिव हो सकें और आप सक्सेस की तरफ तेज़ी से बढ़ सकें. I've told some of you the story when I started my own company and we were 3 weeks away from bankruptcy. With all my money I had ever earned invested in that company, was I frustrated? Yes. I was scared, frustrated, doubtful. But never give up. Things change. ठीक है? Things change. तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं जब मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था तो सिर्फ 3 हफ्ते बचे थे और एक तरफ सिचुएशन थी बैंक्रप्सी की जहां मेरा सारा पैसा लगा हुआ था. तो क्या मैं फ्रस्ट्रेटेड हुआ उस वक्त? मैं हुआ, लेकिन मैं पॉजिटिव होकर एक्शन लेता रहा. So I know where some of you are today, but the recipe for tomorrow is more actions, more meetings, more positivity, more belief. That's the recipe, मेरे दोस्तों.
और आप बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जरूरत है आप और ज्यादा एक्शन लें, और ज्यादा मीटिंग्स करें, और ज्यादा लोगों से मिलें. Today we have some 500 products in India. आज हमारे पास 500 प्रोडक्ट का एक पोर्टफोलियो है भारत में. We have everything from baby products to male products to wellness to mind and mood, fragrances. We have a wide portfolio, but we will never have the largest. We are a cosmetics and well-being company. हमारे पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन ये लार्जेस्ट पोर्टफोलियो होगा शायद ये पॉसिबल नहीं है. I'm pretty sure that you agree with me when I say this. 99% of the people who use the Oriflame products are very satisfied with their results. Right? और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, 99% लोग जो ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वो बहुत ही संतुष्ट हैं इनसे. So I want to talk a little bit about our products. I think it is important to never forget our products. There is no company in the entire world that can survive without having products. तो मैं आपके साथ जरूर हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी कंपनी पूरी दुनिया में बिना प्रोडक्ट्स के सरवाइव नहीं कर सकती. And storytelling, telling your own experiences from having used those products is far more believable than having a banner or a TV commercial. Only 14% of people believe in what companies tell. और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग, आपकी कहानी, आपकी जुबानी. और जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो स्टोरी लोगों को ज्यादा विश्वास दिलाती है प्रोडक्ट पर, रादर देन वो देखें कोई बैनर या कोई होर्डिंग जिसमें किसी प्रोडक्ट का ऐड है. 86% of all of us believe in what we hear from friends or friends' friends. That's believable because we know those people, we understand their experiences. 86% लोग विश्वास करते हैं आपके जो दोस्त आपको बताते हैं अपने प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के बारे में उस पर. Right? Okay. People don't remember hard facts. I can share with you that the Oriflame Wellness Shake has XYZ ingredients and it's extremely natural, etc. Facts of this and that, percentages here and there, milligrams and so forth. They will not remember. But they will remember when they hear a story about a lady from Mumbai who was very overweight, who couldn't play with her child because she was so overweight. She felt fatigued, she lacked energy. And she felt frustrated about her own situation. She started using the wellness products. She lost 12 kilos and has a completely different energy. She can now sit down on the floor, play with her child, and she feels so much happier about herself. People believe that. They understand that much more than the percentages of various ingredients. ठीक है? लोगों को हार्ड फैक्ट समझ में नहीं आते हैं, बट असली कहानियां और एक्सपीरियंसेस जरूर उनको समझ आते हैं. शेयर करना चाहेंगे एक लीडर की स्टोरी आपके साथ जो मुंबई से थी, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी. और जब वो फ्रेडरिक से मिली तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ खेलना चाहती हूँ, बट मेरे ओवरवेट होने की वजह से मैं खेल नहीं पाती हूँ. लेकिन जब उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया तो उन्होंने अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में पाया और एक चेंज उन्होंने देखा अपने इस प्रोडक्ट यूसेज से. Look at this slide here. There's a bottle of wine there. This bottle is called the La Petite Rothschild from France, from Bordeaux. Bordeaux is in southern parts of France, very famous. This bottle of wine is the most expensive bottle that you can buy. The cheapest bottle starts at 75,000 rupees. एक वाला bottle, ठीक है? Not even 1 liter, it's 750 ml. 75, that's the cheapest one. The most expensive ones are 10 lakhs. So अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक वाइन बॉटल नजर आ रही है जिसका नाम है लफीते रॉथशील्ड. इसका सबसे छोटा बॉटल भी 75,000 रुपए का है. This bottle is not very customer friendly. It's in glass. It breaks very easily.
It's also extremely cumbersome to open because there's a cork there. You need a corkscrew to get it open. It's not convenient at all and it's difficult to ship and transport. और ये कोई बहुत ज़्यादा फैंसी बॉटल नहीं है, थोड़ा ग्लास की बनी हुई है, आसानी से टूट भी सकती है और थोड़ा मुश्किल है इसे खोलना भी. But the grapes of this bottle of wine is hand-picked from the vines, right? The grapes are then sat for 10 days to a little bit dry, after which they are crushed. The juice separates from the peel. The peel is left with the juice for 7 to 10 days. That's when the wine takes its red color. After that, it is stored on oak barrels for 3 years. For 3 years, the wine is just sitting in oak barrels. After which, the wine is bottled. The bottle itself stays in the warehouse for 2 more years. So before anybody can buy this bottle, it takes 5 years of production. ठीक है? और इस वाइन को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि जो ग्रेप्स यहाँ यूज़ किए गए हैं उन्हें हैंड पिक किया गया है और एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है इस वाइन को बनाने के लिए जिसमें लगभग 5 साल का वक्त लगता है. This is storytelling. People are willing to pay 75,000 rupees for one bottle because they understand the complexity in making this wine and how it tastes on the palate when you consume it with your meal. ये एक स्टोरी टेलिंग है और लोग तैयार हैं 75,000 रुपए देकर इस वाइन को खरीदने और टेस्ट करने के लिए. Now look at this. One wellness shake is 2,990 rupees, which is good for you. ठीक है? It does you well. One bottle of wine, which may or may not be good for you, it depends on who you ask, is 75,000 rupees. With the right story, price is not an issue. और अगर एक सही स्टोरी है तो फिर प्राइस मैटर नहीं करता है. So I think all of us, we have to together recommit to personal recommendations. The days are over when we just push BPs in the network. We need actual customers consuming and enjoying our products. अब वो दिन नहीं है जहां हम लोगों को सिर्फ अपने बीपीज के लिए पुश कर सकें. आपको हमें मिलकर कमिट करना होगा कि हम पर्सनल रिकमेंडेशन स्टार्ट करें, कस्टमर्स बनाना शुरू करें. If you remember back in the days, Mita, you remember Mita? Back in the days, we always used to say, in your handbag, Tanya Jane, we keep our 3 most loved products. Who remembers that? Exactly. That's right. And also in your handbag, you somehow roll up the Oriflame catalog because you never know. You never know. We need to recommit to this. The Oriflame products are the heroes of your business. ठीक है ना? और अगर आपको याद हो हमारे पुराने दिन जहां हम 3 फेवरेट प्रोडक्ट्स को अपने बैग में रखते थे और एक कैटलॉग भी रखते थे क्योंकि आपको नहीं पता होता था कि कब आपको एक कस्टमर मिल जाए. हमें कमिट करना होगा वापस उसे करने के लिए. If I only share the Oriflame catalog, whether I do it digitally or offline, has no impact whatsoever. But if I only focus around the price, now Kalpana you have to buy because now the milk and honey is 69 rupees. Now you have to buy because the talcum powder is 20% off. Or the cold cream, now in November the cold cream, oh so fantastic, it's so cheap. ठीक है? What happens the following month when these products are no longer on offer? You have to go out and find new customers because there is no loyalty. You only push price. But we need to commit to push the benefits and our own personal experiences of using our products. सिर्फ प्राइस को पुश करके कि प्रोडक्ट सस्ता है आप उसे सेल नहीं कर सकते. आपको स्टोरी सेल करनी है, आपको उसके बेनिफिट सेल करने हैं. Remember what I said in the beginning. We will not be able to compete on the breadth of the portfolio. We will not be able to compete on price.
So where do we compete? Personal recommendations. तो challenges को अगर combat करना है, compete करना है, तो personal recommendation एक perfect solution है. India is the world's largest democracy. ठीक है? The world's largest democracy. Do you think there are other international companies who are interested in India? Of course. All of them want to come to us, to our country, and do business. So if we're going to have a chance in the future, which I know we will, but if we have to push personal recommendations. So personal recommendation एकमात्र solution है जहां हम अभी की जो situation है उससे निकल सकते हैं. I have started saying this like 3 months ago. I started saying what you see on the slide today. And I think this is something we should tell all of our brand partners and all of our new recruits. This is how you use the Oriflame product. You have to get started by placing your first personal order. 3 महीने पहले मैंने आपके साथ ये शेयर किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए. हर एक जो ब्रांड पार्टनर है उसे शुरू करना चाहिए अपने पर्सनल ऑर्डर के साथ. If you guys remember, before the pandemic hit us, we talked a lot about getting started, and all of you, I think we're doing getting started one-to-one actively with your new recruits. Part of that process is to collect the first personal order. अगर आपको याद हो तो गेटिंग स्टार्टेड हर एक के साथ हम किया करते थे और उसी गेटिंग स्टार्टेड का हिस्सा था जहां हम पर्सनल ऑर्डर लेकर आ सकें अपने उस नए रिक्रूट से. I use the products. Once I use the products, I love the products. Once I love the products, I never have to sell. I just share my experiences and I recommend. तो ये बहुत आसान है जहां पर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. एक बार आपने प्रोडक्ट यूज किया तो आप उसे पसंद करेंगे और पसंद की हुई चीज को आसान है रिकमेंड करना. I use it, I love it, I recommend it. बस बहुत आसान है. ठीक है? ठीक है? Okay. Sorry, I thought you fell asleep. I use it, I love it, I recommend it. I use it, I love it, I recommend it. Bas, that's all you need to know how to recruit. All right? So, direct sales, social selling, multi-level networking, whatever you want to call it. We call it social selling, but whatever you want to call it is fine by me. But what are we? We know of traditional B2B companies, right? Companies who sell to other companies, business to business. We know of companies who are in the B2C segment, business to consumers. In social selling, we are in the business to consumers, right? Oriflame is a business, you are a business, and your consumers are your customers. B2B to C. तो आपने देखा होगा कुछ कंपनीज जो B2B हैं, कंपनी हैं और कंपनीज को सेल करती हैं. कुछ कंपनीज जो B2C हैं, कंपनी हैं और अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करती हैं. Oriflame है B2B to C, जहां पर हम बिजनेस हैं, आप बिजनेस हैं और आप अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं. So I've made a slide here to simplify the roles and responsibilities of business to business. ठीक है? So if you see the pink part of the circle, that's the main responsibility of Oriflame. अगर आप इस सर्कल का पिंक पार्ट देख रहे हैं तो ये मुख्य जिम्मेदारियां हैं Oriflame की. The compensation plan, the make money today, fulfill your dreams tomorrow part. That is a major responsibility of Oriflame. To make sure this is attractive, to make sure this is enticing. हमारा कॉम्पनसेशन, हमारा सक्सेस प्लान, हमारा मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो की ऑफरिंग को मजबूत बनाना और स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारा काम है. Our world-class products is the responsibility of Oriflame to make sure we develop new, cool products that have an immediate demand in the marketplace. They are designed in Sweden and produced in specific locations around the world.
हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को आज की डिमांड के हिसाब से तैयार करना हमारा काम है, जो स्वीडन में डिज़ाइन होंगी और जो दुनिया भर में हमारी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। That's a major responsibility of Oriflame. और ये एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है Oriflame की। And the last one is the experience part. What we are doing right now. Seminars, conferences, recognition, foreign trips. That's a major responsibility of Oriflame. और एक और जिम्मेदारी Oriflame की, जहां पर आपको देना वो एक्सपीरियंस जो आप लेना चाहते हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, हमारे सेमिनार्स के थ्रू, हमारे ऐसे मीटिंग्स के थ्रू। What is a major responsibility of all of you? You are also in business. You run your own business. And remember now that whenever I talk to you as if you want to be successful. If you don't want to be successful, you can completely ignore everything I say. If you do want to be successful, बात सुन लो, ठीक है? और आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आप नहीं होना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को और बातों को इग्नोर कर सकते हैं। A major responsibility of you, the leaders, the independent brand partners of Oriflame, is of course recruitment and activation. और आपकी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्रूटमेंट और एक्टिविटी। Bringing in new people to your business, new potential leaders, but also making sure people are active as often as possible. Because to only bring in new and not working with activation, it will be a zero-sum game. In with new, out with old. But if you can keep the old longer and longer and longer, and you continue to bring in new, you will grow, grow, grow. तो आपकी जिम्मेदारी है बहुत सारे नए लोगों को लेकर आना, और जितने लोग आ रहे हैं उसमें से ज़्यादा लोगों को एक्टिव रखना। Trainings is a major responsibility of you. You may think that, hey, Oriflame, you have trainings and you have staff who do trainings. Yes, we do. We want to support you, but it is your responsibility. ठीक है ना? और ट्रेनिंग्स आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सोचेंगे कि ये Oriflame के पास बहुत सारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन उसमें लोगों को ट्रेन करना आपका काम है। We will continue to support you in this regards, but I want you to understand that it is up to you to make sure that your network is trained. They know how to recruit. They know the products. They understand the compensation plan. That's your responsibility. और ये आपकी जिम्मेदारी है, जहां पर आपका नेटवर्क, जिन्हें पता होना चाहिए कि क्या हमारा सक्सेस प्लान है, कैसे लोगों को रिक्रूट करना है और कैसे लोगों को एक्टिव रखना है। And of course, to evaluate, find, and develop new leaders. New leaders below you so that you continue to grow. New leaders below you so that we can show the world that making money today, fulfilling your dreams tomorrow is Oriflame's strength. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़रूर इवैल्यूएट करें और अपने नए लोगों को ज़रूर डेवलप करें एज लीडर्स। And together we stand for motivation. Together we make sure that we are all go-getters, that we are positive, that we believe in what we do together. ठीक है? That's a joint responsibility that we have. And that's the beauty of Oriflame. Business to consumer. We will continue with our support, but I want you to understand that ultimately you are responsible for your success. तो हमारा सपोर्ट हम कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन आपको भी ये ज़रूर समझना होगा कि आपकी ग्रोथ के लिए आपकी जिम्मेदारियों को समझना ज़रूरी है। I did this slide last night. I find this slide very interesting. If I take the earning opportunity of an MBA graduate from India, anywhere, it doesn't matter what you have graduated in, business, engineering, HR, etc., etc. The average MBA graduate makes 12 lakh per annum. मैं यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल लूँ एक MBA ग्रेजुएट का, तो वो सालाना 12 लाख रुपए अर्न करता है। The legal work week in India is 45 hours. That's the law. That's full time. और हफ्ते में 45 घंटे
उसे काम करना है। ये मिनिमम 45 घंटे हैं जो उसे देने ही हैं इस 12 लाख की इनकम के लिए। That's 9 hours times 5. 9 times 5 is 45. और इसका मतलब है हफ्ते के 5 दिन और हर दिन 9 घंटे काम। Every day. ठीक है? Jatin cannot just say, oh, today I chill out at home. Not possible. I mean, he can try that, but he will be in big problems. Right? This is how it is as an employee. There's not personal freedom. There's expectations. That's why they are paid a salary. और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके पास पर्सनल फ्रीडम नहीं है, आपसे उम्मीदें हैं आपके एम्प्लॉयर की जो आपको पूरी करनी है। So if you take 12 lakh divided by 52 weeks, you get 513 rupees per hour. और अगर आप इस 12 लाख को लें और इसे डिवाइड करें साल के हफ्तों में पर घंटे से जब आप काम कर रहे हैं तो आपको 513 रुपए प्रति घंटा मिलता है। So the average MBA graduate in Bharat makes 530 rupees per hour. एक MBA ग्रेजुएट भारत में 513 रुपए हर घंटा अर्न करता है। If I look at the Hall of Fame in Oriflame, are you familiar with Hall of Fame? Right. Anybody who has ever been in top 15 qualifies into the prestigious Hall of Fame, right? The average income is 48 lakhs per year. और अगर मैं हॉल ऑफ फेम लीडर्स की बात करूं ओरिफ्लेम में तो वो एवरेज 48 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। When we have discussed with the Hall of Famers how much do they work on average 20 hours per week. On average. Some more, some less. और जब हमने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना काम करते हैं तो ऑन एन एवरेज निकल कर आया 20 घंटे हर हफ्ते वो काम करते हैं। So if you take 48 lakhs divided by 52 divided by 20 hours, you get 4,615 rupees per hour. और इसका मतलब है 4,615 रुपए प्रति घंटा हमारे हॉल ऑफ फेम के लीडर्स कमाते हैं। Now imagine if you work 10 hours, you'll make over 9,000 rupees an hour. Right? और अगर आप 9 घंटे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। For me, one of my major dreams is to be able to retire by the time I'm 55. मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि जब तक मैं 55 साल उम्र तक पहुंचूं मैं रिटायर हो जाऊं। That's 20 years from now. No. And I will not stop working. Not at all. I don't believe in that. I believe that you age immediately if you stop working. But I will do my own stuff. Things that I love and enjoy. I love and enjoy Oriflame, but I'm still an employee. ठीक है ना? मैं रिटायर ज़रूर हो जाऊंगा लेकिन मैं काम करना बंद नहीं करूंगा। शायद मैं उन चीज़ों को ज़रूर करना शुरू करूंगा जो मुझे पसंद हैं। And I'm sure that many of you have the same dream. To be able to work less and less and less and spend time with what you really love, your family, other ventures, etc., etc. Travel, see new places, experience new things. Isn't that a dream that we all share? और शायद ऐसा ही सपना आप सभी का है जहां पर आप भी जो काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए वो शायद थोड़ा कम हो और जब तक आप रिटायर हो आप उन चीज़ों पर ज़्यादा काम कर सकें जो आपको पसंद हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके परिवार के लिए ज़रूरी हैं। So wherever you are today, whether you are one of those people who work a little bit less today because you worked hard in the past, that's absolutely fantastic. But I want you to have gratitude towards what you have done yourself. Gratitude, my friends, not expectations. और बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद आपने पास में बहुत बहुत अच्छा काम किया है तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखें, ग्रैटिट्यूड जो ज़रूरी है। Oriflame is eternally grateful for all of you. Whatever you have done, we are grateful that you are with us. We are enormously grateful. Jonas used to say, now he passed away a few years ago, as you know. Robert also,
that they are so grateful over all the brand partners around the world. I want you to have that same gratitude towards yourself. रॉबर्ट एंड योनस भी कहा करते थे कि वो बहुत ग्रेटफुल हैं सभी ब्रांड पार्टनर्स के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही ग्रैटिट्यूड रखें अपने लिए. And to feel that gratitude, you have to remember how you started in Oriflame. Where were you? Where was your family at that point? And where are you today? And if you all look back, since you are the top of India, I know that all of you are making a lot more money today than you did 10, 20, 25 years ago. और उस ग्रैटिट्यूड को अपनी तरफ दिखाने के लिए, महसूस करने के लिए याद रखें कि जब आपने शुरू किया था तब आपने किन सिचुएशन, किन कंडीशंस और कैसे शुरू किया था. And if you Perfect. Very still, I like it. If you are one of those people who are working super hard right now because you want to get to diamond, you want to get to senior diamond, you want to get to double diamond, and then you want to get to executive. If you are one of those guys, no. It's not the question, it's a statement. If you are one of those guys, we have the same gratitude towards you. और अगर आप उनमें से हैं जो बहुत जल्दी से अपने नए टाइटल्स लेना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो हम भी आपकी तरफ वही ग्रैटिट्यूड रखते हैं. Some of you have seen this, what I'm going to present now, but I believe with everything in me that repetition is the mother of all knowledge. आप में से कुछ लोगों ने जो अभी आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं पहले देखा हुआ है. And I want to again reiterate, what are we? What is Oriflame? What are we together? और ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम सब क्या हैं, एक साथ हम क्या हैं. To begin to tell you what we are, I must start with telling you what we are not. We are not the Plenty program company, right? We are not the business class company. We are not the recruitment campaign company. Sometimes I get frustrated. Okay? I talk to some of you, I talk to some of your downlines and say, oh, Frederic, Plenty program in September. No. Oh, in August it was fantastic. None of my brand partners will place in order because they don't like the Plenty program. And sometimes I feel, okay, we stop the Plenty program because we are not the Plenty program company. If you rely upon the offers, you are not using personal recommendations. ठीक है ना? और आपको ये बताने के लिए कि हम क्या हैं, आपको ये बताना ज़रूरी है कि हम क्या नहीं हैं. और हम एक प्लेंटी प्रोग्राम कंपनी नहीं है, बिजनेस क्लास प्रोग्राम कंपनी नहीं है, कोई डिस्काउंट ड्रिवन कंपनी नहीं है. We are Oriflame. We are a dream factory. We are an entrepreneur generating machine. All of you create new entrepreneurs every day, every week. We are a company with a human touch. Who believes that Oriflame has a human touch? I know that many of you here believe in that. Every month, I start the month by recording a bunch of birthday messages to all of the first row guys here. Somebody has a birthday every month, of course. That's what happens when you are born. And that's part of personal touch. I know that some of you here complained to Shefali, said, oh, my room is not good, or I'm sharing the room with somebody I don't know, etc., etc. And we try to accommodate you. Many of you came here early in the morning, even though we said very clearly 3 p.m. But we try to help you get accommodation as much as we can. That's human touch. हम एक ड्रीम कंपनी है जहां हम लोगों के सपनों को पूरा करते हैं. हम एक एंटरप्रेन्योर जनरेटिंग मशीन है जहां हम आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं. हम एक कंपनी है विद ह्यूमन टच. हर पॉसिबल सिचुएशन में आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं. And we are a holistic beauty and well-being company. That's who we are. And by definition, by your association, that's who you are. और हम एक होलिस्टिक ब्यूटी एंड वेलबींग कंपनी हैं जहां हम 360 डिग्री जिंदगियां बदलते हैं और आप उसके लाइव एग्जाम्पल हैं. Right. As I said before, only listen to me if you want to be successful. If you don't want to be successful, don't listen.
You can go blah, 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 but do it quietly, please. Okay? So this slide is about coaching coaches. You are business coaches in your network. And this slide is to coach you, from me to all of you. जैसा मैंने पहले कहा कि आप में से वो लोग जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो ध्यान से सुने, और ये जो स्लाइड है ये आपके लिए है क्योंकि आप सब लोग अपने अपने नेटवर्क के बिजनेस कोचेस हैं. Look at the first statement on this slide. Oriflame is my livelihood and it is my business. How many here feel exactly that? अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ें इस स्लाइड का तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि ऑरिफ्लेम मेरा लाइवलीहुड है और मेरा बिजनेस है. I know that when I talk to many of you, I know that you think about Oriflame every waking minute. You talk about Oriflame every waking minute, and you have plans together with Oriflame every waking minute. और जब ये बिल्कुल महसूस होता है जब आपसे बात होती है जहां आप हर पल ऑरिफ्लेम के बारे में सोचते हैं, हर पल ऑरिफ्लेम के लिए कुछ करने की सोचते हैं. But there are some times when many of you in here and many of your downlines have viewpoints around Oriflame. Oh, some people say we should have more discounts. Some people say completely different. We should have no discounts at all. Some people say that we should have atta and rice in our portfolio. And some people say, no, kya baat hai? We should only have cosmetics products. Okay? Whatever views you have around the Oriflame business, we are grateful for those. We are enormously grateful for your views. But we want you to understand that there are 10 lakh people in Oriflame with their own personal views that may differ very much from yours. Okay? Oriflame has a global strategy, and that's the one we are following. I want all of you to embrace what Oriflame is. Okay? If I look at my job, 90% of my time, and I work more than 45 hours per week, by the way, 90% of my time, I thoroughly enjoy. I really love it. That's why I came back to Oriflame, right? I thoroughly enjoy it. Being here today is one of those moments. Bas? Okay. Bas? 10% extremely boring. Present a bunch of slides to some corporate dudes and this and that, and I don't really want to do it. But I have to do it. I have to just embrace that part. Okay? The same with you. You may have your own personal opinions about certain things, but at the end of the day, I would love if all of you embrace what Oriflame is right now. ठीक है? Make sense? Good. आपके बहुत सारे लोगों की कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ व्यूज़ हैं और वो समय समय पर आकर ये ओपिनियन, सजेशंस, व्यूज़ देते रहते हैं. बट आपको भी ये समझना होगा 3 लाख से ज़्यादा ब्रांड पार्टनर्स हैं और सबके इतने सारे सजेशन जो एक दूसरे से इतने डिफरेंट हैं वो पॉसिबल नहीं है. हमारी एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं और हम उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहेंगे. मैं अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं 90% जो करता हूँ उसे एंजॉय कर रहा हूँ. मैं 45 घंटे से ज़्यादा काम करता हूँ हर हफ्ते और 90% का जो मेरा काम है, जैसे आज यहाँ खड़े होकर आपके साथ बात करना, मेरे लिए ये एक मूवमेंट है जो मैंने क्रिएट किया है, मैं एंजॉय करता हूँ. और 10% मेरा काम शायद बोरिंग है, जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे करना है. तो शायद आपका भी ऐसा ही रूटीन होगा, ऐसा ही काम होगा जहाँ ना पसंद करते हुए भी आपको ये करना है क्योंकि ये ज़रूरी है. There are challenges at the moment, but there have been challenges and they're fairly cyclical. Each decade there are new challenges. Oriflame have gone through many of those challenges over these past 55 years, and we have always survived, and we have always strengthened our offering after those challenges. की सिचुएशन में एक चैलेंज है और इन 55 सालों में ऐसे कई सारे चैलेंजेस आए हैं और हम बहुत ही शानदार तरीके से इन चैलेंजेस से बाहर निकले हैं और हर बार अपनी अपॉर्चुनिटी को हमने स्ट्रेंथन किया है. I am 110% sure we will come out of this challenge also. And many of you
will grow to be further heights and new titles. We will win. But now, my friends, is the time to take action. Not tomorrow, not next week, not next month. Now, if you want to be successful. Remember what I said. Frustration should lead to more positivity, more meetings. Right? Now is the time. और ये है वो वक्त जब आपके एक्शंस और ज़्यादा होने चाहिए. ध्यान रखिए, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने का एकमात्र सॉल्यूशन, ज़्यादा एक्शन लीजिए, ज़्यादा मीटिंग्स करिए, ज़्यादा अपने आप को एंगेज करिए काम में. There are, in my opinion, 4 titles in Oriflame that are extremely important. 4 टाइटल्स Oriflame में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. Only 4. It's not director. It's definitely not senior director. But it starts with gold. That's the first most important title in the plan. तो 4 जो टाइटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनमें से पहला है गोल्ड डायरेक्टर. The second one is diamond. दूसरा है डायमंड डायरेक्टर का टाइटल. As a diamond, you start earning good, serious pesa. You travel twice a year. Or you will travel twice a year because now the pandemic, inshallah, is gone. That's a fantastic title. After diamond is executive. Now you really make big bucks, right? Your life has completely changed. Some of you have sent your kids to the USA for schooling. Some of you have bought a new house, bought a new car, and your life has transformed as an executive. And the last one is President Director. So now here's the crux with what I'm telling you. Wherever you are today, where is your plan to get to one of those 4? If you are diamond, what is your plan to get to executive? If you are sapphire, what's your plan to get to diamond? If you're a director, what's your plan to get to gold? If you're an executive, what's your plan to get to president? 4 titles, Meridosto. Those are the most important. Everything else is just a bonus. That's how I would look at it if I was you. और अब आपको ये सोचना है कि ये जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल हैं, आप आज जिस भी टाइटल पर हैं, अगर आप गोल्ड पर हैं तो डायमंड तक कैसे जाएंगे, डायमंड है तो एग्जीक्यूटिव कैसे जाएंगे, एग्जीक्यूटिव है तो प्रेसिडेंट तक कैसे जाएंगे, ये सोचना ज़रूरी है, इस पे काम करना ज़रूरी है. Right. I know, trust me, I know that all of you in this room are proud ambassadors of Oriflame. Your association with Oriflame, yes, now you can clap for yourself. हम जानते हैं कि आप Oriflame के प्राउड एम्बेसडर्स हैं. आप हैं वो जो Oriflame को रिप्रेजेंट करते हैं. That's why my interaction when I go out and meet you and meet some of your downlines, it's such a wonderful moment for me because I can see the pride in your eyes. And I appreciate it and I'm in awe of it. और इसीलिए मेरे लिए वो खास मोमेंट रहता है जब मुझे मौका मिलता है आपसे, आपके डाउनलाइन से इंटरैक्ट करने का. And I personally believe with everything in me that once you're a gold director, you have to be a proud ambassador of Oriflame. Not only because I am telling you this, but because it makes business sense to be a proud ambassador of Oriflame. और एक बार जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाएं तो डेफिनेटली आप एक प्राउड एम्बेसडर होने चाहिए Oriflame के. ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि आपके बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपके बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट है. Who agrees with me? Very good. It's a little bit like the church in here. Huh? That's okay, that's okay.